Photosynthesis, fast revision. See, you know the word photoautotrophs. Autotrophs are self-feeders. Autotrophs are self-feeder. Self-feeder prepare their own food. खुद का फूड बना के खुद को खाना पीना प्रोवाइड करने वाले are autotroph self-feeders. Self-feeders always require CO2, water or H2S, which are inorganic chemical, which are raw material for preparing the food. What is food? Food is complex organic compound which is containing energy-rich bonds. So complex organic compound for the plant are carbohydrate, fats and proteins. Plant prepare their own food. Own food preparing organisms are called self-feeders. Self-feeder require inorganic chemical as a raw material. It is not food for the plant. It is raw material to prepare the food. And food is carbohydrate, fats and proteins. This inorganic chemical react with each other to form glucose C6H12O6. ग्लूकोज में जो कार्बन है वो CO2 से आता है, हाइड्रोजन जो है वो वाटर या H2S से आता है और एनर्जी सोर्स ये प्रोसेस के लिए बहुत जरूरी है. So on the basis of energy source, the autotrophs are further classified into two groups, that is photo means energy is coming from light, chemo energy is coming from chemical reaction. So autotrophs are of two types, chemoautotrophs and photoautotrophs. On the basis of energy source, the autotrophs are using light energy. Light means photoautotrophs, chemical energy means chemoautotroph. Okay, अब देखो, chemoautotroph, photoautotroph both prepare food energy by absorbing energy. दोनों फूड बनाते हैं जिसके लिए एनर्जी एब्जॉर्ब होती है. कीमोसिंथेसिस में भी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, फोटोसिंथेसिस के लाइट की एनर्जी एब्जॉर्ब होती है. सो लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी एब्जॉर्ब करने वाली प्रोसेस. So photosynthesis, chemosynthesis are endothermic, in which simple inorganic compounds are going for constructive chemical reaction to prepare glucose. So it is anabolic process. It occurs within the cell, so it is intracellular. In this process, CO2 is reduced, water is oxidized, so it is redox reaction, mainly reduction reaction. So photosynthesis, chemosynthesis are endothermic, anabolic, constructive chemical reaction in which organisms prepare their own food by using inorganic chemical, and complex organic chemicals are produced within the cell. Photoautotroph obtain energy from light. Okay, chemoautotroph obtain energy from chemical reaction. अब देखो, ये chemical reaction chemoautotrophs को energy देती है. So this is energy giving chemical reaction, exothermic, and chemosynthesis is energy absorbing process, that is endothermic reaction. Chemosynthesis absorb energy coming from chemical reaction. Photosynthesis absorb energy coming from light, that is PAR, photosynthetically active radiation. So photoautotrophs, chemoautotrophs are of two types. Let us discuss their examples. These are the examples of chemoautotrophs and photoautotrophs. Nitrosomonas, Nitrococcus, Nitrobacter. These are collectively called nitrifying bacteria. Along with that, iron bacteria, sulfur bacteria, right? So these are all chemoautotrophs. यहाँ पे मैंने आपको जुगाड़ बोला था. अगर बैक्टीरिया का नाम, because chemoautotrophs are found only in kingdom Monera. अगर बैक्टीरिया का नाम सिर्फ केमिकल पे डिपेंडेंट है, if name of the organism is dependent on only chemical, then it is called chemoautotroph. If name of the organism is dependent on some coloring agent, okay, or it is plant, then it is photoautotroph. Okay, so photoautotrophs are again of two types, oxygenic photoautotrophs, unoxygenic photoautotrophs. Oxygenic photoautotrophs are purple sulfur bacteria, green sulfur bacteria, Van Niels bacteria. Oxygenic photoautotrophs are few Monera, few Protista. Few Monera, few Protista. अब मोनेरा प्रोटिस्टा के जो एग्जाम्पल हमने लिविंग वर्ल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में सीखे हैं वो हमको पूरे याद करने पड़ेंगे. मोनेरा में हमने क्राइसोफाइट, डायनोफैजिल फ्लैजेलेट्स, ओके, क्राइसोफाइट, डायनोफैजिलेट्स, इनको हमने फोटोऑटोट्रॉप्स बोला था. यूग्लेनॉइड्स को मिक्सोट्रॉप बोला था, राइट? सो दीज आर द मोनेरा प्रोटिस्टा, क्राइसोफाइट,
Dinoflagellates are protista. Euglenoid are protista. Monera में हमको मिलेंगे oxygenic photoautotrophs में nostoc and abena, which are collectively called cyanobacteria, collectively called blue-green alga. And all plants are photoautotrophs. All plants में कौन कौन आएगा? Alga, bryophyte, pteridophyte, gymnosperms and angiosperms. So these are examples of all photoautotrophs. This is structure of chloroplast. Chloroplast is present in all eukaryotic photoautotrophs. Chloroplast is present in all eukaryotic photoautotrophs. It is polymorphic, semi-autonomous, very important organelle which perform entire process of photosynthesis. Let us see in detail. See, this is oval, elliptical, discoid, biconvex generally, but in some organism it may be spiral, it may be star-shaped. So it is polymorphic, right? Then it is having outer membrane, inner membrane. It is double membrane bound organelle, which is characteristic feature of eukaryotic cell. The fluid present in the chloroplast is colorless and it is stroma. In the stroma, the piled coin-like structure, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, piled coin-like structure is present, and that is what is the thylakoid से बना हुआ grana. Grana are connected to each other by intergranal lamellae, stroma lamellae. Grana are made up of thylakoids piled one above the other. Grana are connected to each other by intergranal lamellae, stroma lamellae. These membranes which are present in the chloroplast are having photosynthetic pigments. Photosynthetic pigments are chlorophyll A, chlorophyll B, carotene, xanthophyll, which are embedded in the membrane. And as it is double membrane bound, again thylakoids are again like having membrane and internal space lumen loculus. स्ट्रोमा लैमेली के अंदर जो स्पेस है उसको बोलेंगे फ्रेट चैनल. नेक्स्ट डायग्राम में हम इसको डिटेल में देखेंगे. ओके, सो सी, outer membrane, inner membrane, collectively called peristromium. It is lipoproteinous, outermost, selectively permeable. Its structure is like plasma membrane, fluid mosaic model. It is called unit membrane. Its main function is isolation. आजू बाजू पूरा साइटोप्लाज्म भरा पड़ा है. साइटोप्लाज्म से क्लोरोप्लास्ट के एंजाइम, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर आइसोलेट करना, अलग करना, इसके लिए मेम्ब्रेन का काम है. पूरा फ्लूइड जो है वो है स्ट्रोमा. स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन का एंजाइम आरयूबीपी C3 प्लांट में और आरयूबीपी प्लस रुबिस्को, आरयूबीपी रुबिस्को प्लस पेप कार्बोक्सिलेज. C4 प्लांट में पेप कार्बोक्सिलेज भी है एज वेल एज आरयूबीपी कार्बोक्सिलेज भी है. C3 प्लांट में सिर्फ आरयूबीपी कार्बोक्सिलेज है इन द स्ट्रोमा. नंबर ऑफ थाइलाकॉइड पर ग्रानम में वेरी. ओके, जब आप बोर्ड के डायग्राम उतारते हो तो इतने लेबल यहाँ पे आएंगे. सी, आउटर मेम्ब्रेन, इसका काम है लीविंग, selectively permeable, then lipoproteinous. Inner membrane, same thing. It is having DS circular DNA, which is called plastidome or ctDNA. In the stroma, DNA के assistant rRNA, mRNA, tRNA भी present है. So ये एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो बाइनरी फीजन से खुद का नंबर बढ़ाता है. इसको न्यूक्लियस की परमिशन नहीं लगती. So it is semi-autonomous organelle. Stroma contain all the enzyme. It is rich with protein, and Rubisco is one of the most abundant enzyme present in the stroma. It is having osmophilic droplet because ये stroma cytoplasm से osmosis से chemical exchange करेगा. Okay, grana is made up of thylakoid and it is site of light reaction. Grana is site of light reaction. Stroma is site of dark reaction. Entire process of photosynthesis starts and completes in chloroplast. Come to detailed structure of pigment system and the grana which is present in chloroplast. See, this is what is one thylakoid. Thylakoids are piled one above the other to form grana. Right? See, thylakoid is having this part is called grana lamellae, and some thylakoids are having these extended portions are called stroma lamellae, and in the thylakoid the empty space is called lumen loculus.
The empty space is called lumen or loculus. So lumen, loculus, empty space where photolysis of water takes place. In the membrane, the pigments are embedded. In the membrane, the pigments are embedded. Pigments are chlorophyll A, chlorophyll B, carotene, xanthophyll, found in all higher plants. These pigments are working together to form pigment system. So this lumen loculus is in connection with this space in the stroma lamellae, that is called Fred channel. Fred channel is in contact with loculus lumen. Stroma lamellae के अंदर Fred channel is connected to loculus lumen is an empty space in the thylakoid. This is grana thylakoid, this is stroma thylakoid. Function of Fred channel to prepare rubiscope and function of lumen to perform photolysis. Here the pigment systems are embedded in the membrane, and in the membrane only this part called F1 particle, which is ATP synthesizing enzyme, is embedded. Okay, so this is detailed structure of a thylakoid. This one photosystem which is embedded in the quantazome is having detailed structure like this. So quantazome is a photosynthetic unit. It is a subspherical particle. टोटल यहाँ पे ये पूरे मेम्ब्रेन में पिगमेंट सिस्टम डूबे हुए हैं. ऐसा मत समझो कि सिर्फ यहाँ पे है, यहाँ पे मैंने प्रोमिनेंटली दिखा है, लेकिन यहाँ पे भी ग्राना लैमेली, स्ट्रोमा लैमेली दोनों में पिगमेंट सिस्टम्स है. पिगमेंट सिस्टम्स आर ऑफ टू टाइप, PS1, PS2. दिस इज अ कंपोजिशन ऑफ पिगमेंट सिस्टम. पिगमेंट सिस्टम इज हैविंग सेंट्रली लोकेटेड रिएक्शन सेंटर which is surrounded by core complex, and the outermost pigments are called antenna complex. So antenna molecules are a variety of molecule, chlorophyll A, chlorophyll B, carotene, xanthophyll. Their job is to absorb the variety of light. More the variety is absorbed, more will be the collection. Okay, इसके आगे जाके एक्शन स्पेक्ट्रा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में हम देखेंगे कि कौन सा पिगमेंट कौन सा लाइट ज्यादा एब्जॉर्ब करता है. तो अलग अलग पिगमेंट अलग अलग लाइट एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखता है. तो अलग अलग लाइट एब्जॉर्ब करने के लिए एंटेना कॉम्प्लेक्स में ये पेरिफेरल LHC लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में अलग अलग प्रकार के पिगमेंट्स है. ऑल द पिगमेंट एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी एंड हैंड इट ओवर टू रिएक्शन सेंटर बाय द प्रोसेस ऑफ रेजोनेंस. रिएक्शन सेंटर इज ऑलवेज मेड अप ऑफ स्पेशल chlorophyll A, which is P700 or P680. On the basis of reaction center, pigment system are of two types, PS1, PS2. Right? Reaction center अगर P700 है तो pigment system PS1 है. Reaction center अगर P680 है तो pigment system 2 है, PS2. Okay? So this is composition of the pigment system. यहाँ पे मैंने आपको formulas लिख के दिए थे. LHC, AC, light harvesting complex, antenna complex contain variety of pigment. Chlorophyll A, chlorophyll B, carotene, xanthophyll. In lower plants, it may be even phycobilins. Antenna complex are mainly having accessory chlorophyll A and one essential pigment, that is reaction center. So एक बात हम बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे, पिगमेंट सिस्टम में सबसे अबंडेंट पिगमेंट क्लोरोफिल ए है. क्लोरोफिल ए LHC में भी है, राइट, देन कोर कॉम्प्लेक्स में भी है. ये जो पिगमेंट्स है, ये पिगमेंट एक्सेसरी पिगमेंट है, और रिएक्शन सेंटर जो एक पिगमेंट सिस्टम में एक ही होता है वो नेसेसरी है. व्हाई? बिकॉज ऑल द पिगमेंट एब्जॉर्ब एनर्जी, बट द ओनली पिगमेंट रिएक्शन सेंटर हैज एबिलिटी टू टॉस द एनर्जी रिच इलेक्ट्रॉन. ये जो एनर्जी रिच इलेक्ट्रॉन यहाँ से टॉस होगा, वो एनर्जी रिच इलेक्ट्रॉन आगे जाके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम करने की क्षमता रखता है. सो दिस इज द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ ग्राना एंड फोटोसिंथेटिक यूनिट क्वांटासोम. Quantasomes are also called Park and Biggins particles. Park and Biggins particle, ये आपके लिए नया नाम है. Park and Biggins ये दो साइंटिस्ट ने इसका स्ट्रक्चर ढूंढा था. So this is Parks and Biggins particle, quantasome, photosynthetic unit. These are the differences between grana and stroma. आपको मैंने इसके पहले भी डिस्कस करके बोला था कि डिफरेंशिएशन पॉइंट कैसे लिखने हैं. तो ग्राना स्ट्रोमा के डिफरेंसेस के लिए हम ये क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने हिंट दिए हैं, उसके अनुसार हम डिफरेंसेस लिखेंगे. एक ही क्वेश्चन दोनों टर्म को पूछना है. तो हमारे डिफरेंसेस तैयार. लेट अस सी. ग्राना स्ट्रक्चर. ग्राना इज स्टैक्ड, piled up thylakoids.
Stroma is homogeneous, colloidal, colorless suspension. Here we can write down grana is colorful, generally green in color. Stroma is colorless. Then chemical composition. It is made up of lipid, proteins as well as photosynthetic pigment. Stroma is mainly proteinaceous, made up of enzyme. It also contains DNA, RNA, water molecule, osmophilic droplet. Most abundant chemical present in it is Rubisco or UBP carboxylase. Color of grana is green or it is colorful. Its color dependent on photosynthetic pigment. अगर क्लोरोफिल ज्यादा है तो ग्रीन कलर का रहेगा, अगर कैरोटीन ज्यादा है तो रेड कलर का रहेगा. स्ट्रोमा इज कलरलेस. फंक्शन. ग्राना परफॉर्म लाइट रिएक्शन एंड ETS. ओके, प्रोटॉन पंप दोनों में होगा. लाइट रिएक्शन ग्राना में होगी और डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होगी. और एक क्वेश्चन हम यहाँ पे पूछ सकते हैं, व्हाट आर द केमिकल्स प्रोड्यूस्ड इन ग्राना और व्हाट आर द केमिकल्स यूज्ड इन ग्राना? For light reaction, grana uses light as well as water. Stroma uses CO2 and end product of light reaction, that is ATP and NADPH. Okay, grana produces ATP and NADPH on its surface. Stroma produces glucose, which is end product of photosynthesis. So these are the differentiation points between grana and stroma. Last के point कुछ रिपीट करती हूं मैं. ग्राना परफॉर्म लाइट रिएक्शन एंड प्रिपेयर ATP and NADPH on its surface. Stroma perform dark reaction by fixing CO2 to form glucose. In grana, light energy is converted to assimilatory power. In stroma, CO2 is reduced to glucose. These are the डिफरेंशिएशन अकाउंट बिटवीन ग्राना एंड स्ट्रोमा. डिफरेंसेस हमको लिखने बहुत जरूरी है क्योंकि उससे हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं. MCQ में आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा, डिफरेंसेस जरूर लिखिए. दीज आर द इम्पोर्टेंट एंड बिट लाइक थोड़े कॉम्प्लिकेटेड, बहुत डिटेल में लिखी वाले डिफरेंसेस है. डिफरेंशिएट बिटवीन PS1, PS2. सी PS1, it is a pigment system 1 which is having reaction center P700. PS2 is having reaction center P680. Point number 1 सबसे सिंपल, ये बात पे हम ध्यान में रखेंगे. ओके, अब देखो डिटेल. It can work in anaerobic condition. ओके, anaerobic condition मतलब हमने साइक्लिक नॉन साइक्लिक के टाइम सीखा था that PS1 is present in bacteria and if only PS1 is present then only cyclic occur. सिर्फ साइक्लिक होता है तो नॉन साइक्लिक नहीं होता. नॉन साइक्लिक नहीं हुआ तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन नहीं बनेगा. तो अगर अकेले PS1 काम कर रही है तो ऑक्सीजन नहीं होगा, तो ये अनेरोबिक कंडीशन में काम करेगी. PS2 causes photolysis of water, so obviously oxygen is evolved, so PS2 needs aerobic condition. Then it is sensitive to higher wavelength and maximum absorption is of 700 nanometer. It mainly works at lower wavelength and maximum absorption is up to 680 nanometer. It is reaction center P700. Its reaction center is 680. Okay, अब higher wavelength को sensitive है, इसका मतलब सिर्फ reaction center की बात नहीं है. Along with the reaction center, बाकी के जो chlorophyll A है, accessory pigment, in PS1 the other accessory pigments are sensitive to higher wavelength. यहाँ पे reaction center में other pigments are present which are sensitive to lower wavelength of light. Okay, then it is not associated with photolysis of water. It is associated with photolysis and hence it requires Mg++ calcium and Cl- ion. It has no role in photolysis of water. It plays major role in photolysis of water. It occurs in stroma lamellae as well as grana lamellae. PS1 stroma lamellae, grana lamellae दोनों तरफ है. ये mainly non-appressed part में होती है. So it is present in stroma lamellae, grana lamellae. Grana lamellae का कौन सा प्रकार? Non-appressed part. It occurs in appressed part of grana lamellae only. Okay, then participate in cyclic as well as non-cyclic photophosphorylation.
PS2 participate only in cyclic photophosphorylation. Okay, so PS1 is more efficient, PS2 is less efficient. Then it has more chlorophyll A. PS1 has more chlorophyll A, it has less chlorophyll A या more chlorophyll B ऐसा बोल सकते हैं. अब ये थोड़े आउट ऑफ द सिलेबस पॉइंट है. PS1 is dark green in color, PS2 is yellow green in color. It is more efficient, it can work independently. It is less efficient, cannot work independently. It performs cyclic, non-cyclic. In non-cyclic, it help in NADPH formation. In non-cyclic, it perform O2 evolution, that is photolysis. ये पॉइंट ध्यान में रखो, इस पे MCQ आते हैं. PS1 का काम नॉन साइक्लिक में NADPH बनाना है. PS2 का नॉन साइक्लिक में काम है फोटोलिसिस करवा के ऑक्सीजन एवॉल्व करना. राइट? ओके, आगे के पॉइंट अभी देखते हैं. PS1 लास्ट पॉइंट 12th वाला. PS1 is present in oxygenic as well as unoxygenic photoautotrophs. PS2 is present only in oxygenic photoautotrophs. ठीक है, तो एक बार पूरे डिफरेंसेस देख लो और लिख लो. दे आर इंपॉर्टेंट, इस पे MCQs बहुत पूछेंगे.